नमस्कार, जियो स्टांस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है वजमा सायल ने। ये अफ़गान ओरिजिन की हैं, पाकिस्तान में पली-बड़ी हैं और अभी स्वीडन में होती हैं। शी इज़ द को-प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गान वुमेन ऑर्गनाइज़ेशन इन स्वीडन। एक मास्टर्स डिग्री है इनके पास फ्रॉम द लिनियस यूनिवर्सिटी इन स्वीडन। सोशल साइंटिस्ट हैं और स्पेशलाइज़ करती हैं रिफ्यूजी इश्यूज़ में। Vajma, since you specialize in refugee issues and peace and development, मुझे लगा आपसे बेहतर कौन होगा जो बात कर पाए जो अभी पाकिस्तान में अफगान रिफ्यूजीज के साथ चल रहा है उसके बारे में। पाकिस्तान ने बहुत कम वक्त दिया जो अफगान इमिग्रेंट्स हैं उनको ये सोचने का कि वो अपना फ्यूचर के बारे में सोच सकें या फिर अगर उनको अफगानिस्तान भेजा भी जाए तो आगे क्या इंतजामात होंगे। थोड़ा तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपको एक टाइम चाहिए होता है मेंटली प्रिपेयर करने का और फिर किसी चीज़ पे एक्ट करने का। But what we saw was absolute brutality. It started with Pakistan baselessly accusing Afghan immigrants of cross border terrorism and suicide bombings inside the state of Pakistan. कोई इस चीज़ का सबूत नहीं दिया गया, कंसिडरेबल सबूत जो ये साबित कर सके कि ये अफगान इमिग्रेंट्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी है, ना कि पाकिस्तान डिप्लॉयड, पाकिस्तान बैक्ड, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड तालिबान जो उन्होंने अफगानिस्तान में इंस्टॉल किए जब दुनिया पाकिस्तान को समझा रही थी कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन विल एंड ऑफ द डे बी अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन नॉट बी अ गवर्नमेंट। पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाकर अफगानिस्तान के तालिबान के लिए लेजिटिमेसी मांग रहा था, अपने से भी ज़्यादा वो उनके लिए कर रहे थे और दुनिया को बताने में बिजी थे कि ये तो बहुत सेफ हैं। जबकि पाकिस्तान में जब से तालिबान आए हैं उसके बाद टेरर अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, डबल ट्रिपल या 4 टाइम्स आप कह लें। अब तो पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि जो तालिबान हैं, क्योंकि अब खुद के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कि ये लोग एक गवर्नमेंट की तरह काम नहीं कर सकते और इनके साथ सिविलियंस जो हैं सेफ नहीं है। जब पाकिस्तान की फ़ौज ही सेफ नहीं है तो अफ़गान सिविलियंस तो अनआर्म्ड हैं, वो कैसे सेफ रह सकते हैं? उनको घर भेज देना है क्योंकि आप तालिबान से नहीं लड़ रहे हैं, सारी अपनी जो खुन्नस है इमिग्रेंट्स पे निकाल रहे हैं हू कैन नॉट फाइट बैक। सबसे पहले तो इस ब्रूटैलिटी को, इस इनसेंसिटिविटी को आप कैसे देखती हैं? हाउ डू यू फील एज़ एन अफ़गान वुमन और एज़ अ पर्सन ऑफ अफ़गान ओरिजिन? थैंक यू सो मच सोनम। सबसे पहले आपको नमस्कार, सलाम और आपके जितने सुनने वाले हो उनको भी मैं नमस्कार कहूँगी। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आज चूज किया एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कमिंग डायरेक्ट टू योर क्वेश्चन, मैं खुद क्योंकि रिफ्यूजी रह चुकी हूँ पाकिस्तान में, all my life have been a refugee life there, including my family members and relatives. तो एक ऐसा मुल्क जहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्यूजी से रिलेटेड कोई पॉलिसी ही नहीं है, कोई एक क्लॉज, कोई एक आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा कि what if they are receiving refugees, which kind of behavior or which kind of attitude or which kind of law should be taken care if refugees are entering in that state. तो उससे हम क्या expect करेंगे? Certainly the things that you are seeing on the TV and news channels, मैं जो सुन रही हूँ यही कुछ होगा। 1993 से ये सारा कुछ हो रहा है, ये कोई अभी नई ताज़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में जब भी उनको पैसों का मसला होता है, जब भी यूएस उनको कोई और उनकी एक्सक्यूज नहीं सुनते तो वो ये तरीका अपनाते हैं। बहुत आसान तरीका है, जो भी रिफ्यूजीज निहत्ते होते हैं, जो कच्चे घरों में रहते हैं, जो कैंप्स में जिंदगी करते हैं, जो डेली वेजेस पे वो अपना रोजगार चलाते हैं, उन्हीं को ये लोग बाहर करते हैं। इनका जो डबल स्टैंडर्ड है टुवर्ड्स अफगान रिफ्यूजीज, आई वुड रियली लाइक टू टॉक अबाउट दिस। मसला ये है कि पाकिस्तान में दो किस्म के रिफ्यूजीज हैं। एक जो आम अफगान रिफ्यूजीज फॉर अबाउट मोर देन 1.7 मिलियन वहां पे अभी है, और रिसेंटली इनको सिर्फ 28 डेज मिला था पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से सो दैट दे शुड लीव पाकिस्तान।
और इन 28 डेज में इट वाज नॉट लाइक वॉलंटियर रिपाट्रिएशन, इनको फोर्सफुली निकाला गया है, इनके शॉप से, इनके बच्चों को स्कूल से निकाल के भेजा गया है। और जितना अरसा मैं रही हूँ यही होता रहा है, और अभी जो हुआ है ये थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बिकॉज नाउ अफगान्स आर टॉकिंग अबाउट दैट, इंडियंस आर आल्सो टॉकिंग अबाउट दैट, एंड वी सी मोर ऑन सोशल मीडिया एक्चुअली। पहले भी ये होता रहा था लेकिन इतना ज्यादा इसको हाईलाइट नहीं कर रहे थे। तो दो किस्म के अफगान रिफ्यूजीज वहां पे रहते हैं, एक जो कॉमन लोग हैं उनको ये लोग निकाल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा तबका है अफगानियों का जो इनके साथ, इनके जो सो कॉल्ड जहाद ये इन्होंने लॉन्च किया था अफगानिस्तान पे, उसमें इनकी मदद कर रहे थे। वो तालिबान की बहुत सारी जो इनके अपने लोग हैं, इनके अपने ट्रेन शुदा मिलिट्री फोर्सेस हैं, जिसको इन्होंने तालिबान का नाम दिया है। एंड देयर आर अनफॉर्चुनेटली इन माय कंट्री अ ग्रुप ऑफ, वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ अफगान्स जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं अभी भी। वो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में, अपने बेंगलोर में मजे से रह रहे हैं, क्वेटा में मजे से उनके अपने बिजनेसेस हैं, उनको ये लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो रिफ्यूजीज, जो कॉमन, जो लाइक निहत्ते मैं कहूंगी हैं, उन पे इनका जोर चल रहा है, बिकॉज दैट इज द ओनली वे हाउ दे कैन अट्रैक्ट इंटरनेशनल मीडिया टुवर्ड देयर कंट्री। अभी जितना आप देख रहे हो, द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड इज सो complicated. Everyone is so much focused toward Israel and Gaza. Even people are forgetting about Ukraine, what is happening there. तो पाकिस्तान को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए ताकि वो अपना फोकस इंटरनेशनल का अपने तरफ करे, और फिर उसके बाद वो जोली पे लाए, जी हमें पैसे दे वरना हम तो यही काम करेंगे। दे हैव बीन ऑलवेज डूइंग दैट, इट इज नॉट समथिंग न्यू फॉर अफगान। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर वक्त में जो ये सारा कुछ हो रहा है, जिस तरह इन्होंने घर डिमोलिश किए हैं अफगानियों की, और जिस तरह घर घर जाके, शॉप्स में जाके बूढ़े रिफ्यूजीज को इन्होंने गिरबान से पकड़ पकड़ के बेइज्जती से ये बाहर कर रहे हैं, दिस इज समथिंग रियली इनह्यूमन, आई वुड से। दिस इज समथिंग रियली पेनफुल टू सी। और इतने दूर बैठ के आप जब ये सारा कुछ देखते हो, इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रॉमा, बिकॉज यू रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट यू लिव्ड फॉर मेनी ईयर्स। तो ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। you still remember how you faced, what you went through, how your family went through. I remember I was in class 6 जब मेरे बाबा को उनके शॉप से उठाया गया था और डिपोर्ट किया गया था। For 41 days we didn't know where he Your was. dad was He kidnapped was a refugee. in Yes, Pakistan and in deported. Pakistan. Okay. Yes. While you guys were still there, the family was still in Yeah, Pakistan. yeah. Okay. और तब कोई रूल या कोई ऐसा कानून नहीं था पाकिस्तान में कि रिफ्यूजीज जाके वहां पे अपने आप को रजिस्टर कराएं या लीगली कोई डॉक्यूमेंट लें। मैं अभी सुनती हूँ बहुत सारे के ये इलीगल रिफ्यूजीज हैं। वेयर इज द पॉलिसी? डू यू हैव एनी क्लॉज इन योर लॉ अबाउट रिफ्यूजीज? यू डोंट हैव दैट। आप क्यों नहीं बनाते? क्योंकि आपको पता है जिस दिन ये सारा कुछ लीगलाइज हुआ, ट्रांसपेरेंट सिस्टम में आ गया, तो आपका तो करप्शन का वो पूरा बांडा फूट जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी डीप टॉपिक टू डिस्कस। तो ये सारा कुछ अफगानियों पे इतना वो प्रेशर ज्यादा है, बिकॉज दिस कंट्री हैज नो लॉ, बिकॉज दिस कंट्री डज नॉट वांट टू डेवलप एनी काइंड ऑफ लॉ फॉर रिफ्यूजीज। अपने आप को ये डेमोक्रेटिक कहते हैं, यूरोप से बहुत ज्यादा कंपेयर तो करते हैं, लेकिन यूरोप में फिर भी लॉज हैं। अगर आप रिफ्यूजी हो, आप चाहे गैर कानूनी इलीगल भी आते हो, देयर इज अ सिस्टम, यू गो थ्रू दैट सिस्टम सो दैट यू बिकम लीगल एंड यू स्टार्ट अ लिविंग। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। वो रिफ्यूजीज आते हैं, इंटर होते हैं, क्योंकि वो लॉ, वहां पे लॉ नहीं है। वो रिफ्यूजी अपनी जिंदगी एक आम इंसान की तरह गुजारते हैं, एंड देन दे स्टार्ट मेकिंग लाइफ लाइक दे आर नॉट टेकिंग एनी ब्रेड फ्रॉम एनी पाकिस्तानी होम, इंस्टेड दे आर वर्किंग हार्ड. They are working extremely hard to earn money, to make a living, and also that is benefiting Pakistan economy in a very large scale. लेकिन उसके बावजूद जो ये सारा कुछ हो रहा है, दिस इज हाईली इनसेन एंड आई वुड कॉल इट इनह्यूमन एक्ट।
आपके हिसाब से ये सारा जो है पैसे को लेके किया गया है, इट्स टू गेट इंटरनेशनल एड एंड बी रेलेवेंट इन द इंटरनेशनल एरिना अगेन। जो हम समझते हैं वो ये है कि दिस इज पार्टली टू ऑल्सो पुट तालिबान इन देयर प्लेस, क्योंकि पिछले 1-2 साल से लगातार पाकिस्तानी ट्रूप्स और अफ़गान तालिबान के बीच में कुछ ना कुछ स्कर्मिशेस चलते रहते हैं एट द ड्यूरन लाइन। अभी पीछे भी एक हुआ था चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पर, आपको पता होगा, जिसमें वन पाकिस्तानी ट्रूप one trooper was shot and a couple of other people were also injured. और पाकिस्तान की ये शिकायत रही है कि तालिबान से एक्सपेक्टेशन तो कुछ और थी, बट एवर सिंस देव कम टू पावर इन अफगानिस्तान, टीटीपी की जो प्रेजेंस है वो स्ट्रांग हुई है पाकिस्तान में। साथ ही साथ उनकी जो ऑपरेबिलिटी है, मतलब टेरर अटैक्स एग्जीक्यूट करने की, वो भी कई गुना बढ़ गई है। एंड कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट ये है कि अफगान तालिबान आर नॉट हेल्पिंग पाकिस्तान। तो हम तो ये भी रीड कर रहे हैं, आप बताइए आपका इस पे क्या कहना है, कि ये तालिबान को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि they are not good at what they're doing. I mean, we can clearly see that they are not efficient at running a government. The last thing they want is कि और ज़्यादा लोग अफगानिस्तान में आए ना, क्योंकि फिर उनको भी आपको सेटल करना पड़ेगा नए सिरे से। उनको एक कुछ बेसिक सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट का काम होता है ना करना। So they also have that anxiety, and पिछले दिनों में कुछ रिपोर्ट्स आई थी, and I was talking to some people who are actually based in Pakistan who was saying कि इस लपेट में जो तालिबान की खुद की फैमिलीज हैं जो कराची और इस्लामाबाद जैसे शहरों में रह रही हैं, वो भी आएंगी, मतलब उनको भी भेजा जाएगा। सो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ आम लोगों को पनिश किया जा रहा है, ये पूरा का पूरा मैसेज एक तालिबान को दिया जा रहा है। Do you have any data or any information about Taliban families being impacted by this? And how credible do you think is this theory that it's done mostly to teach Taliban a lesson? This is a very good question, and thank you so much for asking this. Sonam, पाकिस्तान को अगर तालिबान से कोई इशू होता तो बहुत ही क्लियर तरीका ये है कि वो जो क्वेटा में शूरा बना है उसको वो बंद करते हैं, ठीक है। कराची में जो इनका एक ऑफिस है उसको वो बंद करते हैं। जितने अभी तालिबान के ऑलमोस्ट 3 और 4 जो इनसाइड न्यूज़ मुझे पता है कि पिछले 2 वीक पहले वो पाकिस्तान में उनका वीज़ा एक्सपायर हुआ था एंड दे गॉट देयर वीज़ा एंड दे हैव इवन पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो ना देते ना उनको, अगर उन्होंने तालिबान को ही प्रेशराइज करना था। दिस इज ओनली अ टॉम एंड जेरी शो दैट दे आर शोइंग टू द वर्ल्ड। अगर इनको टेररिज्म से इतना ही मसला था, इनको डर होती, तो ये तालिबान के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाके लॉबी ना करते। इमरान खान से लेकर अभी जो इनका केयर टेकर वजीर आजम है मिस्टर काकड़, ये सारा बैठ बैठ के तालिबान की तो तरफदारी करते हैं, उन्हीं के बेनिफिट्स पे के लिए बात करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज दैट इज ऑल्सो फ्यूलिंग देयर कॉज इन अफगानिस्तान, इफ वी सी इट ऑन अ लार्जर स्केल। तो जितना अभी तक ये पिछले this forced deportation started almost like from 10th of I think from 15th of October onwards. तो जितना इस अरसे में इन्होंने डिपोर्टेशन की है, दैट इज ओनली द कॉमन पीपल, मोस्टली जो कराची में अफगानीज हैं और पेशावर में। आई वुड कॉल पेशावर मोस्ट बिकॉज पेशावर में कारखानों मार्केट में एक जगह है जहाँ पे 80% सारे अफगान महाजर हैं और वो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, उनके घर हैं, उनके बिजनेसेस हैं, एंड ऑन अ वेरी लार्ज वास्ट स्केल दे आर रनिंग देयर बिजनेसेस। उनको फोर्सफुली उनके शॉप से निकाल के बॉर्डर के उस तरफ उन्होंने छोड़ा है। तो इसमें कोई भी तालिबान के किसी फैमिली को नुकसान नहीं हुआ अभी तक। ये जो अफवाहें ये फैला भी रही हैं सिर्फ इसलिए कि अपने आप को ऐसा दिखाएं कि या वी आर अगेंस्ट तालिबान। नो, दे आर नॉट। अभी अफगानिस्तान से अफगानिस्तान के जो फ्रूट्स We're हैं, not against Taliban, basically, that we are done with Afghanistan. Send a message to Taliban that, okay, if you don't listen to us, then this is what you get. We are sending all your people back.
and we Okay. are also giving you challenges. Matlab, it's not that they are ideologically not aligned, but the problem with terror regimes or terror groups, whether we talk of Pakistani hybrid regime or Taliban regime in Afghanistan, you know, terrorism is one of the policies that they pursue, right? Pakistan also does that. Of It's course, just that, terrorism and getting, free money. Sorry to cut you. Aj Reena Amiri is the special U.S. envoy for Afghanistan. She's deployed in U.S. and she had a special meeting with the Pakistani ambassador in U.S. What this meeting was for, especially for this situation of refugees in Pakistan. तो ये सारा कुछ जो ड्रामा ये लोग कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि इनकी फंडिंग्स बढ़े। अगर इन्होंने देखिए अगर तालिबान इनके खिलाफ होते, अगर तालिबान इनकी बात नहीं सुनते, जो हमारा था गवर्नमेंट जब भी इस तरह का कोई इशू होता तो इमीडिएटली उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज हो जाता था, कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती थी और या वो एक डिप्लोमेटिक तरीके से कोशिश करते कि इस इशू को हल करें। आपने अभी तक तालिबान की तरफ से कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट सुनी है जो उन्होंने कंडेम की हो, उन्होंने कहा हो कि ये गलत है, ना करे इस तरह कोई No, they have. Multiple Taliban people have said it. but कि it was ये not on an official No, I mean, they're talking in public rallies. They are saying that this is barbaric and inhumane. But the thing is, ki, what are you doing beyond that? Is my question, right? If you really care for your people, then there should be some action, right? Just talking about these things randomly in different rallies. Basically, they are trying कि जो अफगान लोग हैं वो हमें कबूल करें, समझें कि हम उनका दुख दर्द समझते हैं. We care about humiliation that Afghans are being subjected to. But असलियत तो ये है वाजमा कि तालिबान से ज्यादा अफगान्स को किसने जलील किया है. अगर आज तालिबान वहां पर नहीं होते काबिज तो बहुत सारे अफगान तो वैसे ही अफगानिस्तान में रहना चाहते हैं ना. आई मीन हु वांट्स टू लीव देयर कंट्री एंड गो लिव समवेयर एल्स एज अ रेफ्यूजी. So that is anyway, I mean, it also becomes irrelevant कि वो किसके लिए क्या कर रहे हैं. बात ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो परेशान हैं. They are being not only persecuted but also mocked. This attack has so many aspects. एक तो जो ग्राउंड पे चल रहा है वो तो चल रहा है, साथ साथ जो सोशल मीडिया पे लोगों को मेंटली ट्रॉमेटाइज करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमने आपके साथ क्या किया, ये तुम्हारी औकात है. कहीं ना कहीं इसका एक नैरेटिव अलग तरह के भी बनाने की कोशिश की जा रही है. आप ये बताइए, जिस जो अफगान्स होते हैं, यू बीइंग एन अफगान वुड एग्री विद दिस दैट दे आर ऑब्सेस्ड विद गैरत एंड ऑनर. इट्स अ वेरी central part of the Afghan culture और पश्तून वाली गैरत को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है. और जिस तरह से अब अफगानिस्तान के लोगों को, वहाँ के बाशिंदों को पाकिस्तान में ट्रीट किया जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, डू यू थिंक इट विल ऑल्सो बी अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर पश्तून्स लिविंग इनसाइड पाकिस्तान? क्योंकि कहीं ना कहीं वो फील करते हैं ना अफगान्स के लिए बिकॉज ऑफ द कॉमन पश्तून बैकग्राउंड. डू यू थिंक दिस विल ऑल्सो एलियनेट देम? I hope so. I have seen that Manzoor Pashtun has spoken about that और जितने उनके MPs हैं पेशावर पार्लियामेंट के कुछ जो हैं उन्होंने इस पे बात की है. रैलीज निकली लेकिन उन रैलीज को भी इन्होंने they were like taking up these people back to putting them in the jail. The army of Pakistan कि क्यों वो नहीं चाहते कि इस तरह कोई भी अवेयरनेस पड़े या लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है. तो yeah, that is true. They are feeling that. लेकिन feeling से beyond क्या हो रहा है? स्टॉप हो रही है ये चीज या कोई जिस तरह आपने कहा कोई ऐसा एक्शन लिया जा रहा है कि इस चीज को वाकई में स्टॉप किया जाए? नहीं, मेरी तरह आपकी तरह बैठ के कॉन्डेम ही कर रहे हैं. और जो पश्तूनवाली की एक बहुत बड़ी एलिमेंट है गैरत, वो तो मुझे तो नजर नहीं आ रही है. अभी तालिबान की जो गवर्नमेंट है फ्रॉम पास्ट 2 years दे आर नॉट इवन एबल टू मेक अ सिंपल गवर्नमेंट. इनकी एबिलिटी तो इतनी भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? जो रिफ्यूजीज अभी ऑलमोस्ट 700,000 रिफ्यूजीज डिपोर्ट हो रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ. दिस इज लाइक इन देयर लिस्ट दैट 700,000 शुड बी डिपोर्टेड, जो उनको कह रहे हैं इलीगल है. और ये वो रिफ्यूजीज हैं, आई शुड मेंशन दिस, मोस्टली जो एक्टिविस्ट हैं
जर्नलिस्ट हैं, फीमेल्स और अ लार्ज नंबर ऑफ देम, जो इसी 2021 के हालात के बाद ये पाकिस्तान डिपोर्ट हुए या आ गए थे, एंड दे हैव ओपन केसेस विद सेवरल अदर foreign countries like Germany, US and EU countries. तो वो तो they are in a very in a very complicated, or I would say in a very, very difficult situation of even their security is questionable there. तो तालिबान को तो वो लोग चाहिए, they are the cream of our society. वो कभी भी इस चीज को कंडेम नहीं करेंगे. तालिबान में अगर पश्तूनवाली होती, जिस तरह हम और आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो बूढ़े औरतों को खींच खींच के, उनके चादरों से खींच खींच के वो लोग निकाल रहे हैं, वो कुछ तो कहते हैं, कुछ भी प्रैक्टिकल उस पे वो काम करते, बट वो नहीं कर रहे. That's really sad, actually. So you still don't feel that there are problems between Pakistan and Afghan Taliban? I believe, I don't feel. I am saying this is happening on a mutual understanding of them. They are deporting only the people that are, the real patriotic Afghans, जो अपने काम से काम रखते थे, जो अपने आप को बचा रहे थे. There are two groups. जो हमारे एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट थे, वो लोग हैं. जो एक तबका था जो इनको हेल्प कर रहा था, इनके सारे ये in their plan A and plan B's, they are still enjoying their life in Pakistan. अगर इनको इतना ही मसला हो रहा है, इनकी इकोनॉमी इतनी इफेक्ट हो रही है अफगानियों से, तो ये सबको निकाले. अगर ये तालिबान को प्रेशराइज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तालिबान की फैमिलीज को निकाले. They are not doing that. So this is actually, I would say, clap coming from one hand. How is the Afghan community, which is spread across the world, जो overseas Afghans हैं, what are the steps that they are taking in their individual capacity to at least make the world aware of what is happening? The first thing, I would talk about myself. Being an Afghan, living a refugee life for almost 24 years, and then in Pakistan, I have always used my platform to speak. और मेरी तरह हजारों इस तरह के अफगान्स हैं जो एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं इस पे. और ये चीज आपने अगर नोट की हो, तो ये ज्यादा पाकिस्तान को अंडर प्रेशर कर रहा है. ये रिफ्यूजी तो निकल जाएंगे पाकिस्तान से, लेकिन जितना इनकी बदनामी हो रही है आलमी सतह पे, ये तो हमेशा वर्ल्ड को अपना एक बहुत पॉजिटिव और ग्रीन पिक्चर दिखा रहे थे ना. बीइंग अ वेरी पुअर कंट्री, वी आर टेकिंग अप मिलियंस ऑफ अफगान्स. और अभी जो ये लोग कर रहे हैं, वेयर इज दैट ह्यूमन कॉर्नर ऑफ देम? तो हमारे जितने एक्टिविस्ट हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं, एंड इवन अ सिंपल अफगान, दे आर स्पीकिंग अप अबाउट दैट, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दे आर डूइंग. और बहुत सारे ऐसे अफगान प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने फंड रेजिंग शुरू की है, उन्होंने डोनेशंस उन्होंने शुरू की है, एंड दे आर सेंडिंग मनी for the families that they are returning. So yeah, obviously that goes a bit slow because of the situation in Afghanistan, क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हम वो नहीं भेज सकते डोनेशंस. तो अपने सोर्सेस के मुताबिक जिसका जितना हो सकता है, they are using their channels and their capacity to spread awareness, to bring up this topic to media, and I think this is happening really good. मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान में थी, तो हर दूसरे साल ये हालात होते थे, तब किसी को भी इतना ज्यादा पता नहीं चलता था, बहुत ही कॉमन बात होती थी. बट टुडे वी कैन सी दैट इट इज ऑन मीडिया. निकालना, ये it used to happen every now and then. Yeah, obviously. I will tell you something. Into पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान जिनीवा कन्वेंशन के साथ उन्होंने कंप्लाई नहीं किया, so basically they are not complying to any kind of international refugee law. लेकिन 2005 में उन्होंने क्या किया था कि एक कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन एग्रीमेंट उन्होंने की थी पाकिस्तान ने UNHCR के साथ, के सेंसस उन्होंने शुरू किया था 2005 में. आई वाज
पार्ट ऑफ दैट वर्क, मैं काम कर रही थी खुद उसमें, कि जितने अफगान रिफ्यूजीज हैं उनको ये रजिस्टर करके उनको एक कार्ड दिया जाता था, POR कार्ड उसको कहते हैं, दैट मीन्स दैट refugee, I don't know, proof of refugee, like you are being refugee in Pakistan. तो वो कार्ड 2005 में जितने इन्होंने जितना कवर कर सकते थे रिफ्यूजीज को कवर किया, वो कार्ड्स इनको दिया, और they had a very large funding. They took a very large amount of funding for that process of census. और फिर 2005 से लेकर 2017 तक वही कार्ड ये एक्सटेंड होता गया. But and the people who had these cards, the families who had POR card, they were like legalized refugees. अभी क्या हो रहा है कि जो families के साथ वो POR cards भी हैं, उनको भी ये लोग निकाल रहे हैं, उनको भी ये लोग बेइज्जत कर रहे हैं, उनको भी ये लोग उनके सारे जितने belongings है उससे वो महरूम कर रहे हैं. उसके साथ साथ their minister has also announced के 50,000 पाकिस्तानी रुपीज से ज्यादा कोई भी अफगानी को परमिशन नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर ले जा सके, लाइक अपने. It means that whatever an Afghan refugee has in Pakistan, be it a property, money, or anything, they cannot take that with them. This is a very open, But can an Afghan own a property in Pakistan? Not on a legal way. जितने अफगान्स हैं जिनको कार्ड मिला है, those who are like the specials of them, they can take that. लेकिन जितने अफगान्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई भी इस तरह की असाइलम लॉ नहीं है. यस, टू द वर्ल्ड दे शो, वो दिखाते हैं कि हमारा ये लॉ है, आप कर सकते हो, ले सकते हो, असाइलम अप्लाई कर सकते हो. लेकिन हकीकत में इस तरह वो कोई भी इस पॉलिसी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करते. अभी आप देखो कि अफगान जितने हैं उनको इवन ये लोग वीजा भी इशू नहीं करते. Visas are almost like it is banned. Nobody is allowed to get visa. So how a person who wants to be legally reside in Pakistan, how they will avail that when the authorities are not even issuing? So this is a very complicated thing. That's why I'm using this word complicated, because that is actually very complicated. They are misusing and misleading people. I also saw a lot of videos in which the people who are impacted, जो अफगान जिनको कहा जा रहा है आप वापस जाएं, बहुत सारे उसमें ऐसे लोग थे जो बुजुर्ग थे या फिर जो बहुत कम उम्र के भी थे. उनका ये कहना था कि हम लोग लीगल्स हैं, बावजूद इसके हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है. There were people who were born in Pakistan. There was one guy who was saying that it's been 40 years. I mean, he's 40 years old, and he says that he was born in Pakistan and Pakistan is his country now, and he cannot relate too much with Afghanistan. अब जाहिर सी बात है, आप वहाँ पैदा हुए हैं, वहीं पे आप पले बड़े हैं, तो आपकी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है. बट दुनिया भर में जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, जो उनके खुद के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हम सिर्फ जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, पीपल हु आर नॉट अकाउंटेड फॉर, वी आर ओनली लेटिंग देम गो सो दैट वी कैन टैकल आवर टेरर प्रॉब्लम बेटर. वी नो इस मुल्क में कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग अकाउंटेड हैं, कितने लोग नहीं अकाउंटेड हैं. सो what do you think can be done from the Indian side also? Because हमारा जब last interview भी हुआ था तो बहुत सारे Indians ने मुझे reach out किया. कुछ ने कहा कि is there a way we could adopt an Afghan person, or is there a way we could contribute to the Afghan cause? अगर आप उसके बारे में भी थोड़ा आज बता दें, if there are any specific ways to donate to even the earthquake victims in Afghanistan, so that I am not directly involved, because it can get complicated sometimes, right? I would want जो लोग चाहें वो directly contribute करें. और क्या किया जा सकता है जिससे दुनिया में ये असल narrative जाए कि भाई ये illegals के साथ ऐसा नहीं हो रहा है. They just don't have a process to even tag somebody legal or illegal. And when you send them to Afghanistan, अच्छा दुनिया भर के जो लोगों की जो सोच है या फिर जिस तरह के माहौल में वो रहते हैं, हम तो
अफगानिस्तान को, आज के अफगानिस्तान को वॉर जोन ही समझते हैं ना. वी डोंट थिंक दैट देयर इज अ लेजिट गवर्नमेंट देयर. वी थिंक देयर आर बंच ऑफ टेररिस्ट्स who just taken control. So you are literally sending people into war zone. तालिबान रूल के बेसिस पे तो दुनिया अफगान्स को asylum दे रही है कि हाँ, it's a terror group there. What could be done better so that people know that this is the reality and not what Pakistan is saying? सोनम, आपके क्वेश्चन को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगी बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट. द फर्स्ट थिंग के जिस तरह अफगान बाशिंदे जो इवन लीगल रह रहे हैं वहाँ पाकिस्तान में, उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है. वही बात मैं कह रही थी कि जो भी अफगान POR कार्ड थे उनके पास, ऑलमोस्ट फरवरी 2023 से पाकिस्तान में एक स्कीम शुरू हुआ था वन ऑफ कैश के नाम पे. और ये जो भी अफगान रिफ्यूजीज आ रहे थे आफ्टर द क्राइसिस ऑफ 2021, तो पर फैमिली 25,000 पाकिस्तानी रुपीस उनको दिया जा रहा था कि वो अपनी जिंदगी वहां पे शुरू करें. What does it mean? This means that Afghan refugees have been never a burden on Pakistan government. They were always being supported by UN, US या जितने भी humanitarian organizations हैं. ठीक है. हालांकि पाकिस्तान को एक तरह से ये बेनिफिट हो रहा था. जो ये वन ऑफ कैश स्कीम शुरू हुआ, तो इसमें पाकिस्तान की जो गवर्नमेंटल बैंक है हबीब बैंक, दैट वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व. उससे टैक्स ले रहे थे ये, और इन्होंने एक पूरा जाफरान के नाम पे एक मिनिस्ट्री स्टार्ट किया था जो ये पूरा स्कीम चला रहे थे. तो उस मिनिस्ट्री में कौन काम कर रहा था? किसको सैलरीज मिल रही थी? पाकिस्तानियों को ही मिल रही थी. अगर ये अफगानीज ना आते पाकिस्तान में 2021 में, ये स्कीम कैसे शुरू होता? ये पैसे की इतनी फ्लो कहाँ से होती? और इतने जितने लोग अभी उस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको सैलरी या उनका रोजगार किस तरह चलता? तो ये चीज तो एक साइड पे कर लें. ठीक है कि देयर इज नो बर्डन ऑन पाकिस्तानी गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अफगान रिफ्यूजीज. और जो लीगल रिफ्यूजीज है उनको भी ये लोग निकाल रहे हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ देम प्रेशराइजिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी. You understand? Like, there is a scheme going on and they need more money. They cannot say directly, जी मुझे दे दो, वो अपना कासा या वो जो अपनी जोली है फैला तो नहीं सकते. So they use very tactical ways. And this is one tactical way of that. ठीक है. दूसरी और इसके जद में इवन जो लीगल रिफ्यूजीज हैं वो भी आ रहे हैं. इन्होंने 2007 के बाद POR कार्डों को या कार्ड्स को जो थे, जो रिफ्यूजी कार्ड्स थे, उनको इन्होंने एक्सटेंड नहीं किया, दोबारा से एक प्रोसेस शुरू नहीं की कि लोगों को दोबारा वो कार्ड मिले. तो क्यों इस तरह किया इन्होंने? If they are so much like a democratic country and they are so concerned about their security, they are so concerned about counter or terrorism, तो इनको चाहिए था कि सिस्टम ठीक करे. क्यों नहीं करते? क्योंकि करप्शन इतनी ज्यादा है. वो अगर लीगलाइज करेंगे, दोबारा से ये सिस्टम शुरू करेंगे, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, लिस्ट बनेगी, इनको पता चलेगा कितने लोग आए, कितने चले गए. तो ये पूरा इनका तो जो अपना एक वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो दरे का दरा रह जाएगा. दूसरी सबसे कंसर्न बात ये है कि ये जो अभी फोर्सफुल डिपोटेशन हो रही है अफगानिस्तान की तरफ, वी डोंट नो कि इनके बीच में कौन अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है, उस तरफ जा रहा है. वी डोंट नो दैट. Maybe that is somebody from their own trained someone from their masjid and going there. आपको फिर बाद में ये भी पता चल जाएगा in coming months, then you will know and you will remember what I'm saying. So you're saying there's counter infiltration, like you never know if the Pakistanis are pushing extremist elements into Afghanistan. Yes. How we know that? They can to unsettle Taliban or to disturb Afghanistan as a whole? I would say Afghanistan as a whole, or maybe even Taliban. I don't know. This is before the time if I speak, but this is how I am seeing this. कि एक फोर्सेबल डिपोटेशन हो रही है, कोई लीगलाइज तरीका नहीं है. इवन डिपोर्ट भी अगर हो रहा है तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, पता नहीं चल रहा है कि बॉर्डर की उस तरफ कौन जा रहा है. ठीक है, हमें मीडिया पे जितने अफगान लोग नजर आ रहे हैं तो आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही तो नहीं होंगे. 700,000 रिफ्यूजीज को इन्होंने टारगेट किया है. क्या ये सारे अफगान होंगे या क्या ये सारे कॉमन लोग होंगे? This is a very concerned question for us.
दूसरी जो बात है कि इंडियंस ने ये कहा कि कैसे हम अफगान्स को हेल्प कर सकते हैं. द वेरी बेस्ट वे आई वुड सजेस्ट कि जितने फॉरेन कर रहे हैं अफगानिस्तान में डोनेशंस भेजते हैं या हेल्प करते हैं, दैट इज वन वे. बट द अदर वेरी गुड वे इज द लोकल फॉर्म. In Afghanistan, there is a group that I am involved with them in some of their activities. It is called ASEEL. उनका एक एप्लीकेशन है असील ऐप के नाम पे. आप उसको कहीं से भी यूज कर सकते हो. They have different kind of donations going on, like for the earthquake disaster, even for the refugee. कल रात ही ग्रुप ने असील ऐप, जो असील ऐप के ग्रुप है, सीईओ ने, उन्होंने एक फंड रेजिंग शुरू की है Could you रिफ्यूजीज के spell लिए. that for us? It is ASEEL. Yeah, and the Indians would be particularly concerned about this, that, you know, not 1 rupee earned by them should go to Taliban in any way. It should directly go to Exactly. the impactees of the earthquake situation. मैं जो So अभी how do असील you के ensure that, you know, this is a legit way of असील के donating? बारे में जो मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज आई नो द गाय हु इज वर्किंग विद देम. ही इज अ यंग अफगान गाय इन जर्मनी pursuing, he did his education also in political science, I think. And they are actually Afghan volunteers working in Afghanistan. And I personally was involved with them in some of their activities, because हम भी कुछ donations भेजते रहे हैं. एक तो, like, I can say they are a very secure people, and then they are the locals of Afghans. They are not the Taliban, or they are not giving that. It is like hand to hand. Families हैं इनके पास. You Taliban can don't stop them? Do no, not stop because them they are from directly helping? humanitarian workers. And that is they are not involved in any kind of political discussion, nothing. So that's a very good, they have a very good way of, you know, making the donations reach. If you go to their app, जो कि है असील ऐप के नाम पे, वहां पे आप इमरजेंसी पैकेजेस आप खरीद सकते हो. जैसे 1 महीने का राशन है या 1 वीक का राशन है, जैसे आप कंबल या कुछ भी जो भी इमरजेंसी में जरूरत हो, दे हैव मेड अ लिस्ट ऑफ दैट. सो यू कैन बाय, यानी आप पे करते हो, बाय करते हो, एंड देन यू गेट अ ट्रैकिंग नंबर. सो यू ट्रैक दैट टिल जब तक वो उस फैमिली को पहुंचती है जो भी चीज आपने Yeah, but डोनेशन how की. do you pay? How do you pay? Do you have to pay It's with a via card, I think. PayPal? It's same like GoFundMe, how you do that. Okay, आप because अपने तरफ the से भी challenge that वो, I faced every time I tried to donate to Afghan causes, and that is why I stick to donating to UN. You know, they have like particular funds dedicated to different countries, so they do have funds dedicated to people in Afghanistan. So I donate directly to UN. The reason being, I mean, the payment system is seamless. When you try to donate directly to people in Afghanistan, वो चैलेंज आ जाता है, कहीं पे वो आपसे पेपाल डिटेल्स मांगता है. नॉट मेनी इंडियंस हैव अ पेपाल अकाउंट. We are used to UPI, you know, just enter 4 digits and money is gone. Like, yeah, I everything else is understand. too We have complicated also for some us. You kind know, of we've that. come a long way in digitization. So people here are used to do very easy things now. So yeah, anyway, I urge the viewers to check this out. Yeah, check Asil, this right? out. और दूसरा, that is I think very very important, क्योंकि मैं खुद refugee जो students हैं, especially with the females, I'm much involved with them, and we are receiving so many requests because those girls are looking for scholarships. They want to study, they want to go further, and if any way, by any chance, we can support that, because right now in our group we have 25 Afghan girls जो के medical से, engineering से और computer science के background से हैं वो लोग, और उनको हम लोग plan कर रहे हैं कि English language सिखाएं, like so that they can, you know, become busy with their life and learn something. And also we have some psychological therapy classes for them. और उन लड़कियों के लिए बहुत अच्छा ये होगा if they get the chance to continue their education in any way. Obviously that needs, you know, support, that needs some kind of Not everybody is interested to donate money or monetarily support. Some people would also say, you know, I'm good at English, I'm proficient.
Yeah. Is there a way I can teach the students there? Are there ways to do something like that also, where people are not necessarily interested in like monetary donation? Yeah, I think that will be the best thing. मैं खुद ये चाहती हूँ, मैं ज़्यादा इस पे बिलीव करती हूँ that teach them catch the fish, don't give them the fish ready. So it's the best thing is that if there is someone who is interested, my social media is open, and I would be really, really grateful if they can like teach them. Why not? If there is one very small mini group we can make and they can start working on that. ह्यूमैनिटेरियन जितने भी काम है वो इसी तरह होता है सोनम। आप छोटे स्केल पे आप शुरू करते हो 1 2 या 3 या 10 लोगों के साथ एंड देन यू रन दैट। So I think that will be really great. If anyone is interested, they can contact you, they can reach me, and we can work on that. Okay, so let's go to cricket now, Pashma. I'm sure you're also enjoying the the cricket that's going on in India right now, and Pakistan has not done very well. Afghanistan, on the other hand, the team has done pretty well, given the kind of resources they have. उनके पास तो कोई एवेन्यूज नहीं है, और जाहिर सी बात है जब आपके मुल्क में माहौल ऐसा होता है तो यू आर नॉट वेरी मोटिवेटेड ऑल्सो. Pakistanis, on the other hand, have a lot more, but despite that they've emerged as losers, and वो political signaling में ये सब में ज़्यादा उनका ध्यान था rather than playing. On the other hand, Afghans को we've seen they've done pretty well, and एक specific किस्म का एक narrative भी निकल के आया भारत में कि यहाँ की जो आवाम है वो अफगान्स को बहुत पसंद करती है और पाकिस्तान को बहुत नापसंद. ये पहले हमारे यहाँ इतना ओपनली नहीं होता था. जब भी हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान जाते थे तो लोग उनके साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे. पीपल हैव बीन फिजिकली हर्ट आल्सो, एंड देन पीपल ऑन द ग्राउंड, वो लोग नारे लगाना और बहुत बदतमीजियां करते थे. बट इंडियन प्लेयर्स नेवर रियली रिएक्टेड. आई थिंक वंस मोहम्मद शमी ट्राइड टू रिएक्ट, उसको भी वो ले गए अपने साथ कि छोड़ो. अब कहीं न ये फीलिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेडोमिनेंट हो गई है कि ये हमारे दोस्त कभी नहीं बन सकते, एंड इनके साथ अब वैसे ही बिहेव करना है जैसे ये हमारे साथ बिहेव करते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी ऑन है. उस लेवल पे नहीं है जैसे पहले होती थी. नॉट बिकॉज़ दे हैव चेंज्ड, इट्स बिकॉज़ वी हैव कम अ लॉन्ग वे एंड वी हैव बिल्ट एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स, जिसकी वजह से हम डिफेंस अपना बेटर कर पा रहे हैं. बट अब ये फीलिंग बहुत प्रेडोमिनेंट है कि पाकिस्तान इज अ कंट्री from which we have to move on. It's not an option, it should die its own death. People have started to take Pakistan very lightly in India now, and they don't care about their feelings anymore कि वहाँ के लोगों को कैसा महसूस होगा. People are like, okay, you've given this to us all your lives, take it. Hate only leads to more hate. बट जबकि अफ़गान्स भी मुस्लिम्स हैं, जब वो मैच जीते तो लोगों का रवैया अलग था. एक तो एक इंडियन बच्चा था, पहले पता चला वो अफ़गान है, बाद में पता चला वो इंडियन बच्चा था. वो नबी के जाके गले लगा, एंड देयर वाज़ इट वाज़ अ वेरी इमोशनल सीन. How do Afghans see this? Because it also will help the Indians understand this narrative which is being built against them, कि इनको मुसलमानों से प्रॉब्लम है इसलिए पाकिस्तान के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं. तो फिर Afghans तो they are not really converts, they were originally Muslims for a long time. We should have more against them, क्योंकि बहुत सारे इन्वेडर्स भी अफगानिस्तान से आए जिनको वहां पे तो सेलिब्रेट नहीं किया जाता, बट पाकिस्तान में बहुत किया जाता है. But people don't hold that against Afghans. This is a very good time that we are talking about cricket. जब अफगानिस्तान ने नीदरलैंड को भी नॉक डाउन कर दिया, I am really happy, and I know that everyone who is watching or will watch this show, they will be happy with that. देखिए, अफगानिस्तान टीम के पास रिसोर्सेस कम थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका जज्बा, उनकी हिम्मत हमेशा से ज्यादा थी, हमेशा से बुलंद थी. And they have shown us now. They have not only made we Afghans really proud, they have also made Indians and their Indian friends really proud. जैसे कि आपने कहा, उस बच्चे को मैंने देखा, and it was really an emotional scene for everyone. और इस मैच के जरिए, इस क्रिकेट मैच के जरिए जितना अफगान और इंडियंस करीब आए एक दूसरे के, जितनी हमारी दोस्ती अब ज्यादा मजबूत हुई है और बढ़ गई है. पहले शायद इतनी ज्यादा नहीं थी या मुझे नजर नहीं आ रही थी, बट आई एम रियली रियली हैप्पी.
और मेरे ख्याल में इसमें किसी को मसला नहीं होना चाहिए। दिस इज समथिंग रियली पर्सनल। अगर मुझे कोई टीम पसंद है, मुझे कोई मुल्क पसंद है, मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ रिगार्डलेस ऑफ what their belief is or what they eat, what they wear. I support them because of their talent they have, because of the entertainment they are, presenting to me and to the world. तो इसमें अगर किसी को मसला हो रहा है तो असल में वो नालायकों को ही मसला होता है। खुद तो कुछ कर नहीं सकते, दूसरे की खुशी वो देख नहीं सकते, तो वो सबको नजर आ रही है। एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। आई विल टेक द अपॉर्चुनिटी इवन टू से थैंक यू टू इरफान पठान। he has been winning my heart like every time जो भी win हो रहा था अफगानिस्तान का, and he was just celebrating that with his beautiful moves. And I think that is something really enjoyable. We shouldn't think about losers. Losers will always stay losers. And what India is doing, that is great. Afghanistan is also like, for me, मैं इंडिया और अफगानिस्तान में कोई डिफरेंशिएशन नहीं देखती। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। व्हेन आई राइट इन माय पेज दैट आई सी अफगानिस्तान एज एन इंडिया एज माय ब्रदर एंड सिस्टर, आई रियली मीन दैट। और आपने जैसे कहा कि अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और ये नैरेटिव फैलाते हैं अक्सर पाकिस्तानी के इंडियन लोग जो हैं वो मुसलमान को पसंद नहीं करते, फिर अफगानिस्तान के साथ क्यों? देखिए, अफगानिस्तान के साथ इंडिया की जो है वो हार्ट रिलेशन है। वी हैव अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ दिस गंदहारा, जहां से हमारा एक कल्चरल बाउंड है इंडिया के साथ। अफगानिस्तान में अभी भी आप जाओ, कंदहार में, जलालाबाद में, वहां पे जितने हमारे हिस्टोरिकल जगह हैं, पहले ये सारा जो एरिया था, इट वाज कमिंग अंडर वन रूल ऑफ इंडिया। सो वी हैव दैट कनेक्शन। नोबडी कैन एक्चुअली इग्नोर दैट और डिनाई दैट। अब अगर एक मुल्क को मसला हो रहा है उस चीज से, तो उसको होने दो, वो क्या करेंगे? जैसे आप कह रहे हैं इंडिया इज नॉट टेकिंग देम सीरियस एनीमोर, इवन अफगानिस्तान इज नॉट टेकिंग देम सीरियस एनीमोर, एंड इवन द वर्ल्ड इज नॉट टेकिंग देम सीरियस एनीमोर, बिकॉज everybody know that okay, this is going somewhere else, this is going more than a sports को sports की तरह ही लिया जाए तो that is the best thing, I think. What do you have to say about this? Like, sending out messages for Palestine during cricket matches, then इस तरह की बयानात देना कि भारत के साथ जब भी हमारा क्रिकेट मैच होता है तो हम उसको जिहाद की तरह ट्रीट करते हैं। जब हम जीतते हैं तो वो इस्लाम की जीत होती है और हिंदूज की शिकस्त होती है। What do you have to say about all this? I mean, every country comes, okay, every player has his own religious beliefs. Nobody's taking that away from him. But there are some regulations also which have been put, like, which have been set by the ICC, right? कि आप political signaling या religious causes के लिए बात नहीं कर सकते, and we didn't see Afghans doing that, or for that matter any other country doing that. But the Pakistanis, they're very good at all that, but जो करना चाहिए था, जिसके लिए आए थे, वो किया ही नहीं। तो सोनम, ये तो इनके हिस्ट्री के साथ चल रहा है। आप देखो, इन्होंने इस्लाम को यूज किया अफगानिस्तान में तालिबान को डिप्लॉय करने के लिए। फलस्तीन के लिए ये कॉकरोचेस की तरह वो चीखें मारते हैं, एंड दे हैव दैट मगरमच्छ के आंसू फॉर फलस्तीन। बट एट द सेम टाइम यू सी के अफगानिस्तान रिफ्यूजीज के साथ अभी कुछ जो हो रहा है, क्या वो मुसलमान नहीं है? अगर इस्लाम को ही इन्होंने बेस बनाना है सबके लिए, तो इस्लाम तो फिर सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, ठीक है? और अगर ये ह्यूमैनिटी को फिर बेस बना के वो बात करते हैं या इंडिया को ये ट्रोल करना चाहते हैं, then that humanity should be also equally between every country. It's not के फलस्तीन के मुसलमान है, उसके लिए आप इस्लाम को चीखें मारो इस्लाम के, लेकिन जब अफगानिस्तान पे आए तो फिर आप भूल जाओ। और इंडिया के लिए जो बात आप कर रहे हो, मसला ये है कि इनके पॉलिटिकल फिगर्स जितने हैं, जो इनकी इलीट क्लास है, वो ये चीज कहते हैं, तो इनके बच्चे यूथ किससे सीखेंगे? टीवी पे किन लोगों को ये देखते हैं? आपने शेख रशीद को देखा होगा पिछले साल जब क्रिकेट मैच हुआ था, इट वाज आई थिंक T20, व्हेन ही सेड दैट आज इस्लाम की हार हुई है। डज दैट मेक इवन सेंस? आप स्पोर्ट्स को एक रिलीजियस वो टूल बना के पेश करो। आई थिंक जीत हुई है। आई थिंक ही सेड इस्लाम की जीत हुई है।
हमने नहीं, भारत को कर दिया। इस्लाम की हार हुई है, कुछ इस तरह की उसने बात की थी, व्हिच No, I वाज़ think Pakistan won a match. ओके, Then he said, या, "Ki this is a victory of Islam." That's what he ओके। said. That guy इस्लाम even हारता said है। he has particular bombs, like specific bombs. अगर वो पाव किलो के कुछ bombs हैं उसके पास, अगर वो हम भारत में मारेंगे तो वो सिर्फ जो काफिर है उनको अफेक्ट करेंगे, जो मुसलमान है वो उसकी गिरफ्त में नहीं आएगा। ये सिर्फ अपने आप को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। इनके यूथ को शायद अभी समझ नहीं आएगी जो कुछ ये कर रहे हैं और वो भी चीखते हैं इनके पीछे कुछ है। मैं नहीं कहूँगी कि सारे ऐसे हैं, लेकिन अक्सर जितना मैंने देखा है यही बात करते हैं, नमक हराम, पता नहीं आप लोग हिंदू के पीछे आप लोग जा रहे हो। मेरे अपने सोशल मीडिया पे आप जाके उठा के देखो जो कमेंट्स मुझे मिलते हैं, तुम एक हिंदू की वो कर रही हो, तरफदारी कर रही हो। फॉर मी the most important thing is that I love India for their performance, for how they are lovable, and that is making my country close to them. मुझे रिलीजियस से कुछ लेना देना नहीं है, दैट इज राजमा, समथिंग वेरी जो पर्सनल। सच बात है, जो अफ़गानिस्तान के मुसलमान हैं, उनको सबसे ज़्यादा असाइलम, डिग्निटी के साथ असाइलम तो वेस्ट ने दिया। वो नॉन मुस्लिम्स हैं, बिल्कुल, उनको बिल्कुल। भगाया किसने? तालिबान ने, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, राइट? सो दिस इज़ वन प्राइमरी रीज़न ऑफ पाकिस्तान्स फेलियर, दैट इट इज़ द स्टेट इज़ सो मायोपिक इन इट्स विज़न, इट इज़ so short-sighted that it cannot see beyond the prism of religion. And that is not how this world is going to work. You know, we it's a multicultural world, end of the day. ठीक है, मुसलमानों की बहुत सारी अपनी countries हैं, but if you see growth wise, development wise, या फिर quality of life wise, the Muslim world is not necessarily the benchmark of it, right? People still look towards the West. Even in India, I mean, हम कितना भी कह लें कि we've come a long way and all, आज भी आप 10 इंडियंस को बोलेंगे ना कि चलो तुम्हें अमेरिका का ग्रीन कार्ड करा दे, तुम जाना चाहते हो, तो कम से कम 3-4 तो बोलेंगे कि हाँ भाई, मैं जाना चाहता हूँ। तो इस पराये में हमेशा सोचना, ये सोच ही बहुत गलत है कि आप हिंदू का साथ दे रहे हैं। भाई, आप उसका साथ दें जो आपके साथ सही है, जिसका अमल आपके साथ सही है, जो आपको इज़्ज़त देता है, इज़्ज़त दो, इज़्ज़त लो। एंड बिफोर यू स्पीक, मैं ये चीज़ बोलना चाह रही थी कि देखिए, हिंदुस्तान के लोगों का मुसलमानों को लेके जो एक मिसट्रस्ट, या फिर आप एक डिस्ट्रस्ट की जो फीलिंग कह लें, वो इसलिए भी है बिकॉज़ वी आवर कंट्री हैज़ बीन अंडर मल्टीपल मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट्स। बट द थिंग इज, वीव कम अ लॉन्ग वे, वीव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट। बट अगर कुछ लोग भारत में उठ के या फिर पाकिस्तान से उठ के उन लोगों को सेलिब्रेट करेंगे जिन्होंने हमारे यहाँ आके कत्लो आम किया, कत्लो गारत किया, तो एटलीस्ट द इंडिजीनियस पीपल विल नॉट लाइक इट, राइट? एंड द रीजन वी डोंट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट अफगान्स इज बिकॉज ठीक है, ये मुसलमान है, बट ये हमसे प्यार करते हैं। हमारे भी तो वैसे भी ऐसा बोला नहीं है कि आप नॉन मुस्लिम से प्यार नहीं कर सकते, कि आप एक मुसलमान का साथ दे रहे हैं। हम तो कार्मा बेस्ड हमारा रिलीजन है, जो हमारे साथ अच्छा करेगा हम उसके साथ अच्छा करेंगे, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा करेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। It transcends the boundaries of religion and, you know, color and creed and all. But unfortunately, these people can't understand that. सोनम, अफगानिस्तान की आप हिस्ट्री उठा के देखो, हमारे मुल्क में हमारे अपने सिख अफगान्स हैं, हिंदू अफगान्स हैं, और अभी से नहीं है। दे आर गोइंग विद अस विद आवर दिस 5000 years हिस्ट्री, और वो अफगानिस्तान के ही हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली जो तालिबान आए हैं तो वो कंट्री छोड़ के वो चले गए हैं। ज़्यादातर वो इंडिया को उन्होंने चूज़ किया। क्यों चूज़ किया? कोई बेस होगी, रिलीजन के बेस पे उन्होंने नहीं किया, सिर्फ भाईचारे और जो ये मोहब्बत का एक रिलेशन है अफगानिस्तान और इंडिया में, इसके बेस पे उन्होंने चूज किया। पाकिस्तान को अगर इस्लाम की इतनी वो तकलीफ हो रही है, उसकी बदनामी का हो रहा है या उसके नाम का हो रहा है, तो अपने मुल्क में जो ये माइनॉरिटीज के साथ ये लोग कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, एंड देयर इज नो लॉ अगेंस्ट दैट, देयर इज नो पॉलिसी इवन अगेंस्ट दैट, तो उस पे ये लोग क्यों काम नहीं करते? ये तो बहुत इजी है कि आप दूसरे के दर पे देखो कि आप क्या कर रहे हो। यू हैव टू लुक एट योरसेल्फ, हाउ यू आर परफॉर्मिंग एज अ मुस्लिम, एज अ मुस्लिम कंट्री। इन्होंने क्या किया है आज तक? लिंचिंग वहां पे हुई है, हिंदुओं के मंदिर इन्होंने तबाह किए, गिरा दिए, हिंदू लड़कियों को इन्होंने फोर्सफुली कन्वर्ट किया। क्या इस्लाम में ये चीज जायज है? बिल्कुल नहीं है।
कोई भी बंदा पाकिस्तान से, कोई भी आलिम या कोई भी स्कॉलर इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता that whatever is happening in Pakistan with the minority people, that is allowed in Islam. No, this is happening because those people have this grudges against India, and because of that grudges they are going and crossing every inhuman way. अफगानिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम लोगों का अपना एक रूट है। We have being like we are Muslim, yes, but we also have connected root with Hindus, with Indians. We have our own Sikh, and we have our own Hindu people, Afghan Hindus and Afghan Sikhs, Afghan Jewish community. तो वी नो आवर वैल्यूज, हमें अपने लोगों का भी पता है, अपने मजहब को का भी पता है। उसको कभी भी टूल बना के किसी जगह किसी दूसरे मुल्क की ह्यूमिलिएशन नहीं करेंगे, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कभी भी रिलीजन को टूल नहीं बनाएंगे। और अगर इन्होंने बनाया है आज तक, तो इनको मिला क्या है? आपके सामने है। India, yes, there is issues with India, but we don't see the success of India, and they are just focusing on this one simple point कि कुछ एक ग्रुप उठ के उन्होंने मुसलमानों के अगेंस्ट या इस तरह कोई एक्सट्रीमिज्म एक्टिविटीज हो गई। ये हर जगह होता है, and I think that is happening in not only in India, it is happening more in Pakistan, I would say. और ऐसा फॉरेन में भी होता है, ईयू जितने मैं रहती हूँ यहाँ पर भी इस तरह के इश्यूज हैं। बट ऑन द अदर हैंड वी आर अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। एग्जैक्टली दिस अगर यहाँ पे दिन में 10 भी इस नौयत के कुछ अटैक्स हो जाएं या आपस में लोगों की पर्सनल कोई फाइट हो जाए जिसमें एक रिलीजन का एंगल निकल के आ जाए, even then if you look at the average, right, India is pretty peaceful even in the face of the terrorism threat that we continue to face. And it's not just emanating from Pakistan. I mean, the Pakistanis haven't been getting successful in bombing Indian cities just because they were too smart. They had a sympathetic demography inside India. They were eventually people from inside India who helped the Pakistanis, right? That is why being a Pakistani is not just about being a national of Pakistan. This is about a particular mindset where you continue to cultivate hatred against the non-Muslims. The very creation of Pakistan was an act of Hinduphobia. That was the biggest act of Hinduphobia in the modern history. If you see it that way, they said we can't live with Hindus. So I think country. you have concluded in a very, very good way that what was the actual reason of this country and why this phobia is happening till now. जब आपकी रूट्स जिस चीज पे बेस होके बनी हो और आप इवन अपने स्कूल्स में, अपने मदरसों में जिस तरह के ये, I don't want to even repeat it here because that is not my call. Being a Muslim, I don't stand for that values जो ये preach करते हैं नॉन मुस्लिम के खिलाफ के भाई जहाद करो, पता नहीं सर तन से जुदा करो। ये अपने बच्चों को जिस तरह की चीजें सिखाते हैं, this is something they are mentally sick and that will cause them eventually. ये इन्हीं पे वापस आएगा और आ भी रहा है। कर्मा इज अ वेरी बिग लेसन, it will serve you what you have in the menu. It will not serve you something that you haven't worked for it. तो ये आ रहा है, पाकिस्तान को मिल भी रहा है। और जितना भी वो कुछ भी करें, आज कुछ भी करें, इंडिया के खिलाफ कुछ भी बोलें, मैं कहती हूँ ग्राउंड में जाके दिखाते तो ज्यादा मजा आ जाता लेकिन वहां पे भी फेल हुए। That's the thing, पाकिस्तान की फौज के लिए भी ये कहा जाता है कि इलेक्शन कोई हारा नहीं तो जंग कोई जीती नहीं. They've never lost an election and they've never won a war. Acha, this leads me to my second last to last question, or maybe you can address both in the same answer. एक तो थोड़ा सा अगर उसके बारे में बात करें, जो अनवारुल काकर जो पाकिस्तान के अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने लम्स में जो लाहौर में एक इंस्टीट्यूट है, आई थिंक जहाँ पे मॉडर्न आर्ट्स या ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि अफगान तो है ही धोखेबाज, इन्होंने तो हमें हमेशा ही धोखा दिया. एक तो इस पे अगर आप थोड़ा बात करें. सेकेंडली, आपने खुद भी इसके बारे में जिक्र किया कि why these double standards when it comes to Arab Muslims and when it comes to Afghan Muslims.
इवन द मुस्लिम वर्ल्ड सीम्स टू हैव अ डबल स्टैंडर्ड। मतलब पाकिस्तानी तो हैं ही हैं, मतलब आपके घर के अंदर सिर्फ कल या परसों एक दिन में अफगानिस्तान में 800 से ज्यादा अफगान लोगों के, सॉरी, इस्लामाबाद में 800 से ज्यादा अफगान इमिग्रेंट्स के घर तोड़े गए हैं, कंप्लीटली डिमोलिश्ड विदाउट अ वार्निंग। फिर हजारों लोगों को बॉर्डर पे धकेल दिया गया है कि आप जियो मरो, हमारा कोई लेना देना नहीं, जस्ट गेट ऑफ आवर लैंड। कोई इसके ऊपर ह्यू एंड क्राई नहीं है। आई मीन जो पाकिस्तानी फिलिस्तीनियों के लिए जाने देने को तैयार हो गए हैं, ठीक है, आई मीन एवरीबडी शुड कंडेम द सिविलियन लाइव्स दैट आर बीइंग लॉस्ट इन गजा राइट नाउ, but then those who did not condemn the atrocities perpetrated by Hamas on Israeli civilians on October 7th, they have absolutely no right to even comment on this matter. Terrorism is terrorism. A civilian life lost, whether it is in Gaza or it's in Israel, it should alarm you equally, right? But मुसलमानों की दुनिया का ये एक डबल स्टैंडर्ड बार बार उभर के आ जाता है। Why is that they're not talking about Afghans so much? Is it because there are no Hindus and Jews to blame here? I will come to your last question first and then the first one. क्योंकि अफगानिस्तान इनके किसी भी इंटरेस्ट को फिलहाल सर्व नहीं कर रहा. That's the main reason. If Afghanistan was serving any particular interest of Muslim world, then they would have talked about Afghanistan. आप देखो जब ये इंटरनेशनल इस्लामिक फोरम जमा हुई थी, जैसे ही तालिबान आए थे अफगानिस्तान में, ये लोग बैठ के तालिबान के लिए लॉबी कर रहे थे कि इनको रिकॉग्नाइज किया जाए, रिकॉग्निशन मिल जाए. अभी वो साइलेंट हैं जो ट्रीटमेंट हो रही है मुसलमानों के खिलाफ पाकिस्तान में, and they are not, as you said, speaking. But on the other hand, when you see what's happening in Palestine, obviously that is inhuman. There is no question about that. Both sides, people should not die for the war and crimes of political reasons. लेकिन उस पे ये बहुत ज्यादा chanting करते हैं, बात करते हैं. But here, when it comes to Afghanistan, they are not speaking because that is not serving their interest. That is a very common thing. जब अफगानिस्तान उनके इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता तो वो इस पे बात क्यों करेंगे? पाकिस्तान की डबल स्टैंडर्ड अभी से नहीं है. They are born with this double standard mindset. You know, Palestine is Muslim, they have human rights. Afghans are not Muslims, or Afghans doesn't have rights. Basma, it's not just about the Pakistanis, right? Even the Arab world is not really speaking about what is happening to Afghan Muslims. No, Also, I don't agree with your point when you say that Afghanistan का कोई utility नहीं है. तो पैलेस्टाइन का तो उस हिसाब से, I mean, बिल्कुल भी utility नहीं बचा है, क्योंकि you know, Abrahamic Accords happened, and now even the Saudis and the Israelis are mending their ties. और अगर आप जो लोकल गजन्स हैं उनकी बात सुनेंगे तो वो तो यही कहते हैं कि यू नो दिस वाज समथिंग व्हिच ट्रिगर्ड द हमास अटैक, व्हिच वाज बाय द वे परपेट्रेटेड फ्रॉम बेरूट एंड ईरान. तो मतलब उनको तो उल्टा वो फिलिस्तीनी ये मानते हैं कि अरब वर्ल्ड की नजर में हमारी तो कोई इज्जत बची नहीं है, या कोई हमारी वो है ही नहीं. दे आर ओके विद इजराइल, और एंड ऑफ द डे हमारे तो हम प्रिजनर्स भी नहीं छुड़ा पाएंगे. दैट वाज देयर मेजर वरी, इज व्हाट दे से एटलीस्ट. अफगानिस्तान के बारे में मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दुनिया भर के मुसलमानों की बात कर रही हूँ. कितने मुसलमान हैं जो लंदन की अभी सड़कों पे निकले हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ अफगानिस्तान में ज्यादती हो रही है. क्यों we are not seeing any people out there on the roads? I think this is something, at first hand, this is something sad that is not happening. Double standard इसी को कहते हैं, और नजर भी आ रहा है जैसे आपने कहा. अब ये क्यों नहीं हो रहा है? That is a very deep question that I also need to dig into it, or maybe ask them directly why it's not happening. Maybe मैं इस तरह कह सकती हूँ क्योंकि Is it because Afghan Muslims are not Islamist Muslims in general? That I will say that we are not that kind of, you know, the very extremist type of people. हम मुसलमान हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह का एक वो नैरेटिव आप देखते हो दूसरे काफिर से भी वो नफरत नहीं है, काफिर से वो नफरत नहीं, माइंडसेट है, दुनिया देखी है.
एग्जैक्टली वो चीज हम में नहीं है, एंड दैट इज वन रीजन। अब तालिब असल में एक नैरेटिव ऐसा बिल्ड हुआ है, आई एम लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री, यहाँ पे कुछ अरब मेरे दोस्त हैं और वो लोग उनका इस तरह नैरेटिव बना है कि ओके अभी तो अफगानिस्तान में पीस है, अभी तो Exactly. मुसलमान आ गए हैं, पहले जो थे वो काफिर थे। दिस नैरेटिव इज ऑलरेडी बिल्ड इन देम। तो वो इसलिए वो तो सोचते हैं कि And that अफगानिस्तान means, में भी कोई Rajma, मसला the नहीं है। Muslim world at large is not transparent. It is not honest. Because when these people go out on the roads in the West, जिसने इनको तहफ़्फ़ुज़ provide किया, asylum दिया, many of the Muslims who've moved to the West have fled war zones, right? Especially the ones we are seeing on roads in London right now. They've come from countries like Syria, countries like Iraq, Egypt, Jordan. These are the kind of people who are out there on the roads. और या फिर आपको पाकिस्तानी बहुत तादाद में मिलेंगे. I didn't see many Afghans there. तो जब ये लोग बाहर निकलते हैं, ये लोग बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, कि इज़राइल को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का ख्याल रखना चाहिए एंड देयर शुड बी अ पॉज़ एंड ऑल। अब वहाँ बात करें डेमोक्रेसी की, सेक्युलरिज़्म की, बट एट ऑन द अदर हैंड आप अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो हुक्मरान है वो मुसलमान है, वो अभी मतलब 2 दिन पहले का ही मैंने एक तस्वीर देखी, शायद बल्ख से थी वो, जहाँ पे गाड़ी में ही कुछ लोगों को गोली मार दी थी अब तालिबान ने। So this is happening on a daily basis in Afghanistan without a provocation or without a trigger. जैसे Israelis are now saying that October 7 attacks were a trigger, right, for them. And you tell me, like, which country will not, retaliate? No country will not retaliate, right? तो ये तो फिर आई थिंक ये एक माइंडसेट का ही प्रॉब्लम है. इट्स नॉट इवन स्पेसिफिक टू अ कंट्री. No, it is not specific to a country, I would say, but it is the mindset. As I said, इनकी इतनी brainwash हुई, एक narrative ऐसा बना है कि भाई अभी जो तालिबान हैं, they are really good people, they are Muslim and they are taking care of everyone. जो females हैं उनको उनकी rights मिल रही है, पहले जो थी जो औरतें थी वो बेइज्जत हो रही थी. This sort of things is actually so much strongly built up in people outside जो countries हैं. तो वो इस वजह से भी वो आवाज गोरे नहीं और उठा. मुस्लिम्स. Yeah, mostly I would say, unfortunately I would say, Syrian people I have seen when I was in debate with them. I have seen people from Saudi Arabia, Syria, Arab जितने मुल्क हैं, वो जैसे कि आपने कहा वो खुद EU में बैठ के यहाँ की आज़ादी से वो लुत्फानंदोज होते हैं, like they enjoy that. But when it comes to Afghanistan, then they are like, no, Taliban are the best option because they are Muslim. Yeah, narrative And when you building. say they're not, then you're called an Islamophobe or something. No, I'm not called Islamophobic because at the end they are saying, okay, you are Muslim, but no, you are not a good Muslim. But when you debate with them, because I never debate with them based on only religion, but I bring facts. कि जैसे आपने कहा ये atrocities जो हो रही है, लड़कियों को स्कूल तीसरा साल चल रहा है, and there is no girl allowed in Afghanistan to go to school. So if it is ट्रू इस्लामिक रिलीजन, तो आप इस्लाम में मुझे दिखाओ कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि लड़कियों को आप स्कूल ना भेजो, तालीम ना दो अपने तालीम बच्चों पे को. बहुत जोर है बहुत कुरान जोर है. क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा. सो they never win this debate from us. People who know the real actual meaning of religion, मैं ये नहीं कहूंगी कि everything is good, everything is portrayed good. No, there are certain very strong weak points we have that it needs to be addressed and it needs to be developed and worked on. लेकिन सिर्फ इस वजह से वो जो एक नैरेटिव बना है ना, आलमी नैरेटिव बन गई है, उसको लेकर बहुत सारे लोगों के पास अभी भी ऑन द ग्राउंड रियलिटीज नहीं है. So that's why you don't see that much support to Afghans. While as आप देखो कि फलस्तीन की जो जंग है और जितने फलस्तीनी खुद बहुत ज्यादा यूनाइटेड भी हैं और वो बोलते भी बहुत ज्यादा है. हमारा एक I would talk about this and I feel sad about this when I speak कि हमारे अपने अफगानिस्तान में हमारे लोग भी यूनाइटेड नहीं है. We have certain people who are Taliban sympathizers. And then we have certain people who do not like that.
मैं अपने इस तरह के लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं कि हाँ, तो एक सिर्फ स्कूल जाना ही तो मसला है, बाकी तो सारा कुछ हल है, लाइक एवरीथिंग इज सो सॉल्व्ड इन अफगानिस्तान, यानी अभी तो जंग नहीं है, सो व्हाट डज इट मीन? एंड देन It's माय डायरेक्ट क्वेश्चन, unimaginable that, या माय डायरेक्ट Afghanistan, half क्वेश्चन, of the population is women, right? एग्जैक्टली, अफगानिस्तान की तो इसका मतलब 52%। आधी आबादी आपकी अनपढ़ है एंड आपको लग रहा है कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं, क्योंकि जंग नहीं है, क्योंकि पीस है। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि अच्छा आप मुझे पीस की डेफिनेशन बताओ, नेगेटिव पीस ज्यादा बेहतर है या पॉजिटिव? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दे डोंट नो, दे एक्चुअली डोंट नो हाउ टू डिफरेंशिएट दिस। तो लोगों के पास अवेयरनेस की कमी है। और अफगानिस्तान जैसे मुल्क में जहां 40 इयर्स वॉर रह चुका है, हमारे बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो जितने हैं वो तालीम से महरूम रह चुके हैं। सो हाउ दे डेवलप न्यू नैरेटिव, हाउ विल दे लर्न थिंग्स? क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आएगी जब वो स्कूल में उसको भेजा ही नहीं जाएगा? दैट्स वन You're थिंग। right. या You're right. आई विल कम टू, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम होगा, अनवारुल हक काकड़ के उस टॉपिक पे आती हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड हिज फुल नेम इज अनवारुल हक काकड़। ही इज बेसिकली पश्तून by himself, raised and brought up in Quetta, and then he moved on and studied in other parts of Pakistan. रिसेंट जो लम्स में इसकी इंटरव्यू हुई थी, उसको मैंने खुद सुना भी, और काफी ऑलमोस्ट 2 मरतबा मैं सुन चुकी हूँ। मैं सुनना चाहती थी इस बंदे की पूरी वो जो लॉजिक है, एंड आई फील वेरी बैड। एक ऐसा बंदा जो इतने हाई लेवल पे बैठ रहा है और अपने यूथ को झूठ बोल रहा है, हिस्ट्री के बारे में इसको कुछ पता ही नहीं है। इसने वहां पे बैठ के अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों को ये कहा कि भाई अफगानों ने हमें भेजा, और ये गंदुमक ट्रीटी के बारे में इसने बात की कि हमने तो कुछ नहीं किया था, ये तो अफगान थे जो इन्होंने अपने, इनके फोर्थ फादर्स और ये थे, इन्होंने हमें बेच दिया, दैट वाज नॉट अस। और ये ड्यूरन लाइन के बारे में इसने कहा दैट इज सोल्ड आउट एंड देयर इज नो लाइन एनी मोर, एंड पेशावर वाज सोल्ड व्हेन वी वर इवन नॉट देयर। ये बंदा, I will suggest that even if any Pakistani will watch your show, I will suggest कि ये लोग जरा हिस्ट्री को उठा के, जो एंग्लो वॉर थी, जो द ग्रेट गेम वॉर थी, उसको उठा के ये जरा पढ़े, जहां पे कैप्टन लुइस ने अपने 200 ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ कहाँ पे आके उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला करना चाहा पहली मर्तबा। कौन सी कौम थी जो उन्होंने पैसे दिए उसको, ताकि वो अफगानिस्तान की जो एक थी जगह थी, अली मस्जिद के नाम पे एरिया था, वहां पे एक पोस्ट, इट वाज अ पोस्ट ऑफ अस, एंड वहां पे ये लोग हमला करना चाह रहे थे, एंड देयर it was the Afridi people of Pakistan sold out to the British, and they give the permission to British soldiers, those 200 soldiers, to attack Afghan soldiers. It's the same tribe, Shahid Afridi's tribe. Exactly. So it's the same tribe that attacked my homeland in 1947. Exactly. ये बंदा बैठ के हिस्ट्री बताना चाह रहा है, मैं हिस्ट्री नहीं कहूंगी, ब्रेन वॉश करना चाह रहा है अपने यूथ को। he really needs काफिर to, तो खुद अफगान है, right? Like खुद पश्तून है, right? Yeah, he is Pashtun, but the interesting thing is कि मैं कल ही परसों असल में एक इसके अपने पाकिस्तानी पार्लियामेंट से एक पार्लियामेंटेरियन इसके बारे में बता रहा था कि 15 years he lived in London by name of Afghan, using Afghan passport. He had asylum. Yes, this is not my words. This is on the record. You can search about that. I mean, where can I find this? Google? I can send you the video, the person who is, yeah, because I've not heard of this. If you can send it to me. Yeah. 15 साल ये अनवारुल हक काकड़ अफगान के नाम पे, अफगान आइडेंटिटी के नाम पे लंदन में असाइलम पे रह रहा है, रिफ्यूजी। फिर जब इस बंदे को सेलेक्ट करके प्रेसिडेंटशिप में वो बिठा देते हैं और इसकी सिल्फियों की शौक पूरी हो जाती है, फिर उसके बाद ये बंदा आके ये कहता है कि अफगान लोग they have sold us or they are selling themselves. Then who you are? एक सबसे ह्यूमिलिएटिंग बात जो इसने की थी, जो
I think it was, I don't अफ़गान्स remember तो the, आज तक उनका रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जो भी बाहर की जो कुव्वतें आई, जो बारूनी we उनके have साथ been वो in लड़े। war, Yeah, but बिल्कुल इसमें कोई शक Pakistanis नहीं। have, on the other hand, been a client state of first America and now China. एग्जैक्टली इनके अपने जो लेट प्रेसिडेंट है मिस्टर मुशर्रफ, वो ऑन एयर उनका रिकॉर्डेड वीडियो है कि वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि यस वी मेड तालिबान, वी ट्रेन देम, वी सेंड देम बैक टू अफगानिस्तान, वी गिव आवर बॉर्डर एंड आवर पोर्ट्स टू यूएस टू अटैक अफगानिस्तान। तो फिर ये बंदा, आई डोंट नो इसमें इतने गट्स कहाँ से आए कि ये बात बैठ के ये और वो भी अपने यूथ के सामने ये बात कर रहा है। ठीक है, जो दूसरी इसने बात की थी कि जो रिसेंटली पेशावर कैंट में मस्जिद में अटैक हुआ था, जो सुसाइड बॉम्बर, ही सेड कि उसमें इट्स फनी फॉर मी रियली कि उसमें जो सुसाइडर था उसके डीएनए टेस्ट हमने किए एंड ही इज अफगान बाय डीएनए टेस्ट। तो कमबख्त तुम्हारी उनकी भी अब नेशनैलिटी भी पता चल जाती है उसमें, हाँ, डीएनए अगर टेस्ट से। इसकी हम डीएनए टेस्ट करें तो ये भी तो अफगान है, तो इट मींस ही एक इज हसन टेररिस्ट। निसार हैं, हो सकता है कि ये काकर साहब और जो हसन निसार साहब हैं, वो एक ही डॉक्टर के पास गए हों, क्योंकि वो हसन निसार साहब जो हैं, उन्होंने भी अपना डीएनए टेस्ट कराया था पीछे, एंड ही फिगर्ड आउट दैट वो उज़्बेक है। ही इज़ बेसिकली अ पंजाबी, पाकिस्तानी पंजाबी, और रादर पंजाबिस्तानी, एज़ आई वुड लाइक टू कॉल हिम। उनका भी डीएनए टेस्ट में आया कि वो उज़्बेक हैं, तो पहले तो पता नहीं ये कौन से डीएनए टेस्ट होते हैं जिसमें आपके मज़हब और आपकी नेशनैलिटी भी क्लियर हो जाती है। जनरली ये एथनिसिटी की बेसिस पे होता है, एंड पाकिस्तान के अंदर तो खुद इतने ज़्यादा जो एथनिक अफ़गान्स हैं, जो पश्तून्स हैं, दे आर एथनिक अफ़गान्स, राइट? हू आर लिविंग इनसाइड पाकिस्तान। एक टाइम तक तो ये केपीके वाज़ अ पार्ट ऑफ Afghan nation only, right? It was not ever a part of Pakistan or British India back then. बिल्कुल यही बात है कि देखें ये अपने ही लोगों को जो पश्तून एक बहुत बड़ी, ऑलमोस्ट इट इज लाइक 48% ऑफ पाकिस्तान, उनकी ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ही इज कॉलिंग ऑल द पश्तून्स जो कि है ओरिजिनली अफगान बाय एथनिसिटी, दे आर अफगान, एंड ही इज कॉलिंग देम दे आर टेररिस्ट। हाँ, क्योंकि हमने डीएनए किया था, डीएनए में निकला कि वो अफगान है, then you Crazy. are also an Afghan। फिर आप भी तो टेररिस्ट हुए, फिर आप किस तरह पहुंच गए उतने हाई एलीट जगह पे? इट मींस यू हैव टू रीथिंक व्हेन यू स्पीक। तो दिस इज रियली रियली सैड। और सबसे बड़ी सैड बात यह है कि जो एक पपेट गवर्नमेंट तो मैं नहीं कहूंगी, एक पपेट ग्रुप जो अभी अफगानिस्तान में फोर्सफुली बिठाया गया है, वो लोग ये सारा चीज सुन के भी चुप हैं। So this also, shows that their very strong connection. अगर ये हमारा कोई गवर्नमेंट होता, इलेक्टेड गवर्नमेंट होता, तो इस बात पे कभी भी चुप नहीं रहते। वो बात करते, बोलते इस चीज पे, and they will make sure that they say sorry. Absolutely. Pakistanis, I think, made a great mistake by trusting the Taliban. अब उनको भी शायद समझ तो आ चुका है, बट शर्म आ रही है कि भाई जो हमारे खुद के ट्रेन किए हुए बेटे हैं, आज हमें आंख दिखा रहे हैं, बट दे शुड हैव थॉट दिस थ्रू, that it's always easier to deal with a democratic government than an insurgent group or a militant group, because it's not a homogeneous group end of the day. Even if the Taliban leadership says something, the fighter on the road is not necessarily going to follow that or obey that. So it's also always difficult to deal with militant groups. But Pakistan का तो वो लाइलाज बीमारी है ना, उनको लगता है कि ideological leaning है और बस हमारा काम तो बन गया, but that's not how it works. I'm done, Vajma. Is there anything you want to say as your concluding remark? I would say that thank you so much. First of all, this is I would say again, you are the only one who has taken up this topic really serious. जो refugees के साथ, Afghan refugees के साथ हो रहा है, and I think we all, being a human, not being Afghan, Indian or whatsoever, being a human, we need to raise awareness about this. आप बेशक डिपोर्ट करो, लेकिन उसका एक तरीका होता है, लीगल तरीका होता है, उसको फॉलो करो। अगर आप फिर उसको फॉलो नहीं करते तो मुझ जैसे हजारों लोग इस पे बात करेंगे, फिर आपको वो चीज सेंसिटिव नहीं लगनी चाहिए। वी विल स्पीक अबाउट दैट एंड वी विल टॉक अबाउट दैट। फिर इसको आप भुगतो, इन सिंपल वर्ड्स आई विल से।
दूसरी लास्ट बात, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फाइनल्स ऑफ क्रिकेट बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान. आई होप, एंड इफ इंडिया विन तो वो तो डबल जीत होगी मेरे लिए. आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज शो. थैंक यू सो मच वाजमा, आपने ज्वाइन किया बहुत शॉर्ट नोटिस पे. इट वाज अगेन अ लवली कॉन्वर्सेशन. It's always a pleasure to speak to you, or for that matter, any Afghan friend. My experience has always been fantastic when it comes to interacting with Afghans. On that note, thank you so much again, Wajma, and Thank you. कोशिश करेंगे फिर से बात हो जल्द से जल्द. Sure, sure. Thank you so much. Bye bye. Bye for now. Namaste.